Assalamu alaikum. Welcome back with the series of lectures Correct English Usage. In English, there are some nouns which are apparently plural, but they are used both as singular and plural. यानी कुछ nouns ऐसे होते हैं इंग्लिश में कि जो बज़ाहिर प्लूरल होते हैं क्योंकि उनके एंड में एस होता है, लेकिन वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं. These nouns include means and innings. यानी means and innings ऐसे nouns हैं कि जिनके एंड पे s है, जो कि which is a sign of plural in English. लेकिन ये दोनों nouns plural ही यूज नहीं होते, but they are used sometimes as singular and sometimes as plural. अब इन nouns के साथ जो verb यूज किया गया होता है उससे मालूम होता है कि they are singular or plural. For example, if we use the word means as singular, तो ये ऐसे यूज होगा language is a means of communication. Here we used a, which shows that the noun means is singular. इसी तरह this word means refers to language, and the word language is also singular, or is also shows that the noun means is used as singular. इसी तरह अगर हम इसको यूज करें, there are many means of transport, तो यहां पर means again the same form but used as plural, क्योंकि इससे पहले हमने वर्ड मैन यूज किया जो कि प्लूरल को शो करता है. अब प्लूरल बनाने के लिए इसको मजीद हम मीन्सेस यूज नहीं कर सकते, इट वुड बी रॉन्ग. या सिंगुलर बनाने के लिए इसको मीन नहीं कह सकते, एस हटा नहीं सकते हैं. अगर मीन यूज करेंगे इट वुड बी क्वाइट डिफरेंट वर्ड, और meanses does not exist. तो चलिए word means which refers to source or way, इस मीनिंग में जब यूज किया जाए तो ये चाहे सिंगुलर यूज करना पड़े या प्लूरल यूज करना पड़े, it has the same form. Next word is innings. तो innings, it is a term used in cricket normally. तो for example, in the sentence, he scored 61 runs in one innings. Now we cannot say one inning. अगर inning यूज करेंगे तो it would be wrong. There is no word inning in English. और अगर हम इसको ऐसे कहें कि there are 4 innings in a test match, यहाँ पे 1 है the beginnings, 1 shows this is singular, और यहाँ 4 है 4 to the beginnings, तो यहाँ पे
is used as plural. अब यहाँ हम इसको मजीद प्लूरल बनाने के लिए अगर innings कहेंगे तो it won't be possible, it would be wrong. तो चाहे innings सिंगुलर है या प्लूरल है, it has the same form, innings. Well, there are some nouns in English which are from Greek origin, यानी कुछ nouns ऐसे हैं जो ग्रीक से इंग्लिश में आए हुए हैं, and these nouns end in is, like analysis, thesis, crisis, ellipsis, etc. These nouns have an is in their end. इस क्लास के तमाम nouns का प्लूरल बनाने के लिए इनके बाद एंड पे es नहीं लगाया जाता, बल्कि they are made plural by changing this I into e. तो एनालिसिस का प्लूरल यूं बन जाएगा, थीसिस का प्लूरल THESES हो जाएगा, क्राइसिस का प्लूरल CRISES हो जाएगा, और इसी तरह एलिप्सिस का प्लूरल भी ELLIPSES हो जाएगा. अब सिंगुलर इज एनालिसिस, whereas the plural is analyses. Singular is thesis, जबकि उसका प्लूरल लॉन्ग वावल हो जाएगा theses. Crisis, crises. Ellipsis, ellipses. So in singular we have a short vowel is, और जब प्लूरल बनाते हैं तो लिखने में es होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में उसको लॉन्ग वावल लॉन्ग करके e प्रोनाउंस किया जाता है. So this is also another thing which is to be kept in mind while writing and speaking correct English. Hopefully you will stay with us till the next lecture. Allah Hafiz.